Okay, let's do. So we have already covered the mean deviation about mean deviation about median for all the different types of data, continuous data. Okay, group data that is continuous, discrete frequency table, and when we are having raw data, then how to find the mean deviation, right? Right. Now Yes. today we'll be discussing standard deviation. Directly I'm writing the formula. You don't have to go that much deeper that like what we got from where we got and all. So basically it is exactly like the mean deviation only. Standard deviation. Standard deviation and variance we will be discussing. We represent this first, this variance. Okay, we will be representing it with sigma. This is sigma. Okay, this sign is called sigma. You must be thinking that previously I told you this is sigma, then I am telling you this is also sigma. Okay, I have told you that is sigma, that is summation sign, which is the sigma sign, right? Right. So basically this sigma, which I have written for variance, this is the small, okay, that is the capital we say, and this is the small sigma. Okay, getting it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This sigma, we represent the variance with this sign. And while finding the variance, basically we don't do anything. We just find sigma square. Okay, whenever we are finding variance, that means we are finding sigma square. And that will be previously while finding the mean deviation about mean or about median, how we used to find the absolute value of the deviations like xi minus x bar. Okay, summation of all fi xi minus x bar divided by n, right? 1 by n. This was the formula, right? For mean deviation about mean. Okay, now the formula is summation of fi. Okay, we are having here we were having the absolute value, here we are having the square, just that is the difference. Here we are having the deviation, whatever we will be finding, that's square. Okay, 1 by n. Basically the absolute value we were taking, because while finding the deviation, while creating the deviation column, no, we realize that the numbers can be negative, the numbers can be positive. Okay, while finding the deviation, okay, the numbers which we were finding, that can be negative or positive, right? And we were taking each time the absolute value, क्योंकि हम जब डेविएशन का कॉलम क्रिएट कर रहे थे, पहले हम मीन फाइंड कर रहे थे और उसके बाद हम डेविएशन का कॉलम क्रिएट कर रहे थे। एक एक हमारे पास जो डेटा पॉइंट था, अगर ग्रुप डेटा था तो हम क्लास मार्क को हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट, वी आर ट्रीटिंग द क्लास मार्क एज अ एक्चुअल डेटा पॉइंट। ओके, और हम क्लास मार्क को ध्यान में रख के डेविएशन कॉलम क्रिएट कर रहे होते थे। ओके, ईच डेटा पॉइंट से मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। और जब हम डेविएशन क्रिएट कर रहे होते थे, तब हमारा जो डेविएशन वाला कॉलम था, वहां पे पॉजिटिव वैल्यूज भी कुछ आते थे, कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आते थे। बट हम क्या लेते थे वहां पे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे, मॉड लेते थे। क्यों? क्योंकि फिर हमें ऐड करना होता था। ओके, जो हमने डेविएशन फाइंड किया होता था उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हमें सारे नंबर्स को ऐड करना होता था। तो अगर हम सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, उनमें से कुछ नंबर पॉजिटिव है, कुछ नंबर नेगेटिव है, तो हो सकता है हमारा फाइनल आंसर 0 आ जाए। राइट? राइट? Yes, ma'am. ओके, इसलिए हम वहां डेविएशन फाइंड करने के बाद अगर कुछ नंबर्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो हम इन जनरल सबका एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेते थे। दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर ही लेते थे। ओके, एंड इसकी हेल्प से हमारा कभी भी, अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में मीन डेविएशन फाइंड किया और कभी भी हमारा आंसर फाइनल 0 तो नहीं आता था। राइट?
राइट, राइट, yes or no? Yes, ma'am. Okay, so that time this modulus was helping us, and now talking about the variance, we will be doing the square. कि अगर in case हमने जो deviation column create किया वहां कुछ नेगेटिव नंबर्स आ गए, कुछ पॉजिटिव नंबर्स आ गए, तो हम स्क्वायर कर लेंगे. ओके, हम स्क्वायर कर लेंगे कि हमारा नेगेटिव रहेगा ही नहीं, कोई भी नेगेटिव वाले नंबर नहीं रहेंगे. इवन इफ वी आर गेटिंग नेगेटिव, वी आर गेटिंग पॉजिटिव, वी विल बी टेकिंग द स्क्वायर ऑफ ऑल ऑफ them. Okay, and then we'll be using the formula accordingly. We will be getting the variance from here. Now variance is this one. Standard deviation is just the square root of this one. Standard deviation का मतलब होता है just sigma, okay, which we can find by taking the square root of this all. Getting it? तो जब भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा, एट फर्स्ट हम वेरिएंस फाइंड करेंगे. वेरिएंस का वैल्यू हमारा जो भी निकल के आए, सपोज हमारा वेरिएंस 200 निकल के आया, तो फिर हम उसका स्क्वायर रूट करके बोलेंगे दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. आर यू गेटिंग इट? Ali and Alina, are you getting it? Yes, ma'am. Okay, so let's take questions from here and let's do it. And one more thing. ओके, मैंने बोला था ये जो हम मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, ओके, अबाउट मीन, मीन डेविएशन, अबाउट मीडियन, ये सारे ही ओके टर्म्स जो हम फाइंड कर रहे थे. एक बार सोच के देखो, अगर मैंने डेटा पॉइंट कलेक्ट किया है हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, दिस मच सेंटीमीटर, दैट मच सेंटीमीटर, 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 हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, तो हमारा जो मीन आएगा दैट विल बी ऑल्सो सेंटीमीटर. यस और नो? क्योंकि हम सारे डेटा को ऐड ही तो कर रहे हैं एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी सेंटीमीटर. यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वाला डेटा पॉइंट, तो हमने मिडिल से कोई एक डेटा पॉइंट उठाया और बोला दिस इज द मीडियन, दैट विल बी ऑल्सो सेंटीमीटर. ओके, मोड का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो हमें डेटा दिख रहा है, ओके, दैट इज मोड. ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अगर 2 दिख रहा है, या लाइक नॉट 2, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द height, so it can be 164, 165, 167, 170, 180, so these are the centimeters. Okay, so हमारा जो मोड होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का जो भी हाइट होगा दैट इज द मोड. ओके, एंड दैट विल आल्सो बी सेंटीमीटर ओनली. यस और नो? ओके, तो मीन, मीडियन, मोड ये सारे ही सेंटीमीटर में आ रहे हैं. हमारा एक्चुअल डेटा भी सेंटीमीटर में था, हमारा मीन, मीडियन, मोड जिसकी भी हम बात कर रहे हैं ये भी सेंटीमीटर में ही है. ओके, हम मीन यूज करके या फिर मीडियन यूज करके या फिर मोड यूज करके हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ हमने मीन डेविएशन निकाला, वहां भी हमने क्या किया था, जस्ट ऐड ही तो किया था सारे डेटा पॉइंट को, देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट. ओके, डेविएशन को हमने ऐड किया था, तो हमारा मीन डेविएशन भी सेंटीमीटर में था. बट हमने यहाँ पे जो वेरिएंस निकाला है, ध्यान से देखो, वेरिएंस जो हमने निकाला है यहाँ पे हमने डेविएशन को स्क्वायर कर दिया. तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो हमें सेंटीमीटर मिला होगा, लेकिन स्क्वायर करने से ये जो हमारा वेरिएंस आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका यूनिट चेंज हो जा रहा है. यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड डेविएशन ओके इज द मेजर. हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉलर नंबर है, मतलब हमारा डेटा बहुत ज्यादा लाइक दे आर क्लोज टू ईच अदर. इफ इट इज अ बिग नंबर देन हमारा डेटा बहुत डिस्पर्स्ड है. गॉट इट? वेरिएंस बस हमें हेल्प करता है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने में. वेरिएंस इज नॉट द मेजर ऑफ डिस्पर्सन. आर यू गेटिंग इट? क्यों? क्योंकि वेरिएंस का यूनिट ही डिफरेंट है. हम कभी भी
हम कभी भी लेंथ को एरिया से तो कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? राइट, Yes, ma'am. वी कैन कंपेयर लेंथ विथ लेंथ, दैट्स वाई हम बोलते हैं ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आए तो हमें पता होना चाहिए वेरिएंस वी आर फाइंडिंग, दैट इज फाइन, बट हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, क्योंकि क्यों है स्टैंडर्ड डेविएशन? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो यूनिट होगा हमारे एक्चुअल डेटा का भी वही यूनिट है। सेंटीमीटर लिख के मैंने समझाने की कोशिश की है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट और हमारे एक्चुअल डेटा का यूनिट सेम है। तो ये यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगा ये हमारे एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट नॉट द वेरिएंस। गॉट इट? इज इट क्लियर अली एंड अलीना? Yes, ma'am. नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, यहाँ फॉर्मूला में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, जस्ट जो हमारे पास मीन डेविएशन में हम एब्सोल्यूट वैल्यू यूज कर रहे थे यहाँ पे हमें स्क्वायर वाला कॉलम क्रिएट करना होगा। लेट्स टेक एग्जांपल। This is the frequency we are having, this is the table we are having. Now you understand दैट जब भी हमारे पास ऐसे ग्रुप डेटा होते हैं, कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, तो हम सबसे पहले मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क फाइंड करते हैं, राइट? राइट, यस और नो अली एंड अलीना? प्लीज फाइंड Yes, इट, ma'am. प्लीज डू इट। यहाँ हमें क्लास मार्क फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है 30 और 40 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 40 और 50 के मिडिल में कौन सा नंबर आएगा, 50 और 60 के मिडिल में कौन सा नंबर आएगा, हमें दिख रहा है। तो जब तुम्हें समझ में आ रहा है ऑलरेडी, तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। लेट मी नो व्हाट आर यू गेटिंग।
Let's write it quickly. Can we say that our midpoint will be in between 30 and 40? There is a number 35. Yes or no? Yes or no? Any confusion over here? Ali and Alina. No, ma'am. उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? डेविएशन. पर ध्यान रखना, जब हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो हम मीडियन को नहीं ले रहे. ओके, बिकॉज मीडियन विल नॉट बी अ प्रॉपर मेजर. हम हमेशा मीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स बार. ओके, तो हमें अब मीन पहले फाइंड करना होगा, तभी हम डेविएशन कॉलम क्रिएट कर पाएंगे. प्लीज फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा. कैसे फाइंड करते हैं मीन? एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ ऑफ आई. यस और नो? यस और नो? राइट. एक्स बार हमें फाइंड करना है. द फॉर्मूला वाज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई by summation of f of I. Okay, let's find fi xi. 35 into 3, 45 into 7, 55 into 12. Okay, 65 into 15, 75 into 8, 85 into 3, 95 into 2. बट ये तो बहुत ह्यूज नंबर हो जाएगा. तो हमारे पास और भी मेथड्स है मीन फाइंड करने के लिए, जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में. हम अज्यूम मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं. लेट मी हेल्प यू विद दोज टू मेथड्स. अगर हमारे नंबर्स इतने बड़े, लाइक द लार्जर नंबर्स होते हैं, 35, 45, 55, लाइक 2 डिजिट नंबर होते हैं. ओके, देन वी कैन यूज द इजियर वे टू फाइंड द मीन. व्हाट वाज दैट वे? ये जो हमारा कॉलम है, आई एम हेल्पिंग यू रिमाइंडिंग दोज टू के वेज फॉर फाइंडिंग द मीन. हम क्या कर रहे होते थे? सबसे पहले हम हमारा ये जो क्लास मार्क मिड पॉइंट वाला कॉलम क्रिएट होता है, हम यहाँ पे देखते हैं कितने कितने रोज है. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 रोज है. 7 रोज है, राइट. इन 7 रोज में से मिडल वाला रो कौन सा है? तो ध्यान से देखो, मिडल वाला रो हमारा 1 2 3. दिस इज द मिडल रो. यस और नो? राइट. राइट. Yes, ma'am. ओके, अज्यूम मिन मेथड में क्या कर रहे होते थे हम? मिडल वाले रो को हम ए अज्यूम कर रहे थे. अभी मैं बता दूं कि अगर नंबर ऑफ रोज तुम्हारे इवन नंबर है, देन दो 2 ऐसे रोज आएंगे जो मिडल में होंगे. उनमें से तुम कोई भी एक रो को अज्यूम कर सकते हो. ओके, यहाँ हमारा मिडिल रो क्लियर है 65. हमने 65 को ए अज्यूम कर लिया. क्या तुम्हें याद आ रहा है कि मीन फाइंड करते टाइम, लाइक व्हाट वाज द प्रोसेस व्हाइल यूजिंग अज्यूम मीन मेथड? क्या होता था? हम एक ए वैल्यू अज्यूम करते थे हमारे एक्सआई कॉलम से. यहाँ हमने लिया 65. ओके, मिडिल रो से हम नंबर निकाल के उसे अज्यूम मीन अज्यूम करते थे. उसके बाद हम क्या कर रहे होते थे? डेविएशन क्रिएट कर रहे होते थे. मतलब हमारे पास जो एक एक डेटा पॉइंट था, उससे हम 65 को माइनस करना है हमें. दैट मीन्स 35 माइनस 65, 45 माइनस 65. ओके, एक कॉलम क्रिएट करो, नॉट हेयर, सेपरेट. ओके, राइट एक्स आई 35, 45, 55 like this, and then create a column xi minus a. That means you will be doing 35 minus 65, 45 minus 65, 55 minus 65. Are you getting it, Ali and Alina? Yes, ma'am. Okay. Then हमें यहाँ पे जो नंबर्स मिल रहे हैं, अगर इन सारे नंबर्स में ये जो हमारा क्लास साइज है, दैट इज 10. अगर कॉमन फैक्टर जा रहा है सारे ही नंबर्स में 10,
तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं. Are you able to recall these rules for finding the mean? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. क्यों हम ये सब कर रहे हैं? क्योंकि मैथ्स में हमें दिखता है मल्टीप्लिकेशन करना ये ज्यादा डिफिकल्ट है रादर देन डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो मैं यहाँ पे कॉलम क्रिएट करके दिखाती हूँ. ओके, हम मीन फाइंड कर रहे हैं. अब भी हम क्या कर रहे हैं? जस्ट मीन फाइंड कर रहे हैं. ओके, या तो हम अज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे या फिर स्टेप डेविएशन मेथड. 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95. ओके, हमने 65 को ए अज्यूम किया है. नाउ वी विल बी फाइंडिंग एक्स आई माइनस ए, जिसे हम डी आई भी बोलते हैं. ओके, दैट विल बी 35 minus 65. Okay, 35 minus 65, that will be 30, right? Yeah, that will be 30. Okay, that too minus 30. 45 minus 65, 55, 65 minus 20. 55 minus 65 minus 10. Okay, 0. Then 75 minus 65, 10. 85 minus 65, 20, and then 30. Getting it? Any confusion so far? अब मैंने बोला था कि एक बार देख लेना. यहाँ जो हमारा क्लास साइज है h is 10, is like is that like 10 can divide all the numbers or not? So yes, it can divide all the numbers, right? तो हम यहाँ पे UIB फाइंड करते हैं, that is xi minus a by h. h हमारा क्लास साइज है, that is 10. We'll be getting -3 over here, -2 over here, -1 over here, 0 over here, 1, 2, 3. Got it? Yes, ma'am. कि यहाँ हम मुझे फ्रीक्वेंसी भी लिख लेना चाहिए था, तभी तो हम क्रिएट करेंगे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके. ओके, हमें फ्रीक्वेंसी भी यहाँ लिखना चाहिए था. दैट इज 3, दैट वाज 7, दैट वाज 12, दैट वाज 15, दैट वाज 8, दैट वाज 3, दैट वाज 2. अब हम FI UI फाइंड करेंगे. ओके, ये जो स्टेप डेविएशन हमने कॉलम क्रिएट किया है, ओके, इसका हमें like FI UI and then mean we will be finding with the help of this UI value. So let's do -3 we are having and 3 we are having. Now doing the multiplication is really simple. -2 we are having, 7 we are having, -14. -1 we are having, 12 we are having, -12. 0 and 15, 0. Okay, 8 into 1, just 8. 3 into 2, 6. And 2 is there. And 3 is there, 6. Any confusion so far, Ali and Alina? No, ma'am. Okay, now we just need to add all of them. Okay, summation of FI UI we need to find. Please find it. They will be finding U bar over here. That is summation of FI UI by summation of FO5. Okay, summation of FO5 is 50. Okay, you just do summation of FI UI and tell me what you are getting. What you got is a summation of all of this: -9, -14, -12, +8, +6, +6. I'm doing.
प्लीज डू इट क्विकली। सी आई कैन सी ओवर हियर, थोड़ा सा अगर लॉजिकली हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें दिख रहा है 6 + 6 ऐड होके 12 क्रिएट करेंगे और -12 ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो जा रहे हैं, राइट। अब बचा हमारे पास +8 -9 -14। ओके, -9 +8 क्या होगा? -1। -14 -1 -15 वी विल बी गेटिंग। एक बार चेक करके बताओ, हाउ वी गेटिंग -15? Yes or no? Are you getting the same, Ali and Alina? Yes, ma'am. Okay, -15. Please let me know. Okay, so -15 we are getting. We will be doing the division, or you can keep like let's do just cancellation. 5 3 times 15, 5 10 times 15. -3/10 we are getting u bar. अब क्या तुम्हें पता है? There was a formula that x bar is equals to a plus h u bar. Do you know this formula? Yes or no? Yes or Yes, no? ma'am. Yes, ma'am. ओके, यू बार हमारा -3/10 है। 10 gone, we are getting 65 -3, that means 62, that is our mean। या तो ऐसे मीन फाइंड कर लो, ये सारे प्रोसेस तुमने सीखे होंगे प्रीवियस क्लास में, या तो ऐसे फाइंड कर लो, या फिर अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है तो हम मल्टीप्लाई भी करके लाइक 35 × 3 +45 × 7 +55 × 12 +65 × 15 +75 × 8 +85 × 3 +95 × 2 ऐसे FI XI फाइंड करके और उसे समेशन ऑफ FI से डिवाइड करके भी मीन फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, तो हमारा मीन आया 62। अब हमें क्या करना है? डेविएशन कॉलम क्रिएट करना है, मतलब मीन से हमारा ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट कितना डेविएटेड है। 65 है हमारा मीन, वेट नॉट 65, 62, 62 राइट, या 62। So we will be finding 35 -62, 45 -62, 55 -62, 65 -62, 75 -62, 85 -62, 95 -62. Please find it quickly. What are you getting, Ali and Alina? Please tell me quickly. Let me know quickly what are the numbers in this column.
Are you getting minus 27? Please tell me quickly. Unmute yourself and tell me what are the numbers you are getting over here in this column. I'm doing it. Okay, do it. Yes. What are we going to get? Are you doing a squaring also? No, ma'am. Ma'am, minus 70. सब्ट्रैक्शन करने में इतना टाइम लग रहा है. Ma'am, minus 17, minus 7, 0, 13, 23, 33. 0, no. But it's 3. 65.3. और सारे नंबर प्लीज कीप ऑन चेकिंग. यस. Ali, what you have got? Ma'am, I thought 13, that was 23, 33. 13, after that 30, 33 you say? 23 23 and and 33. 33. 23, 33. Okay, now we need to do squaring. क्यों? क्योंकि यहाँ तुम देख सकते हो हमारे कुछ नंबर्स पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है. हो सकता है जब हम एफ आई एक्स आई लाइक फ्रीक्वेंसी के साथ दिस कॉलम इफ वी विल मल्टीप्लाई एंड देन वी विल ऐड, हो सकता है हमारे आंसर 0 हो जाए. इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे. we'll be doing square of 27, that is 729. Square of 17 is 300 and like 289, not 3, 289 I think. 17 is square, let me check. Yeah, it is 289. Okay, 7 is square 49, 3 is square 9, 13 is square 169, 23 is square, एक बार चेक करो, is it 529? 33 is square, need to check it. 1089. प्लीज चेक इट फर्स्ट. ओके, अदरवाइज एक भी नंबर अगर हमारा यहाँ पे रॉन्ग हमने लिख दिया तो हमारा पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा. अब हमें इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड विद 729. 9 3 times 27, 7 carry 2, 3 2 times 6 7 8 and 7 3 times 21. ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे कॉलम हम बहुत अच्छे से क्रिएट करेंगे क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू ऐड ऑल द नंबर्स फ्रॉम हियर, राइट? So yes,
अली एंड अलीना, ये जो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, this column you will be able to create it by yourself, right? Yes, ma'am. Okay, and after that हमें सारे numbers को add ही तो करने हैं and then divide करना है total, like sum of frequencies. Getting it? Sigma square, that means variance will be the summation of all fi xi minus x bar square. Okay, so variance also we need to find and sigma also we need to find. Will you be able to do it? Yes, ma'am. Yes, Alina, you. Let me write the multiplication quickly. Okay, let me write it. We'll be getting 588 over here. We'll be getting 135 over here. हम यहाँ जो नंबर्स लिख रहे हैं इस कॉलम में बहुत ध्यान से अच्छे से लिखेंगे ताकि हम यही एडिशन कर पाए. ओके, विल बी गेटिंग 1 3 5 2. We will be getting 1 5 8 7 and we will be getting 2 1 7 8. ओके, नाउ अब हमें इन सारे नंबर्स को ऐड करना है. मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि हम बहुत ध्यान से लिखेंगे कि यही हम ऐड कर सके. तो we'll be adding 7 plus 3, 10, 10 plus 8, 18, 18 plus 5, 23, 23 plus 2, 25, 25 plus 7, 32, 32 plus 8, 40, 0, carry 4. Okay, now 8 plus 2, 10, right? 10 plus 8, 18, then 3, 19, 20, 21, 21 plus 5, 26, 26 plus 8, 34, 34 plus 7, 41, 41 plus 4, 45, 5, carry 4 again. Are you getting me what I was talking about, how to do the Yes. addition? Then 1 plus 0, 1. Okay, then this 5, 1 plus 0, 1 plus 5, 6, 7. Okay, 8 9 10, 10 5 15, 15 plus 1, 16 plus 4 20, 0, carry 2. Now the last one, 2 2 4. अब यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है. ओके, 2 2 4 plus 1, 5 6 7 8 9 10. This is what we are getting. Got it, Ali and Alina? Yes, ma'am. इतने अच्छे से लिखना ना यहाँ पे सारे नंबर्स को कि यही ऐड कर सको. ओके, वी आर गेटिंग 10050. वेट, हमारा अभी सिग्मा स्क्वायर ही हम फाइंड कर रहे हैं. चलो फाइंड करके देख लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा है. ओके, सिग्मा स्क्वायर वी आर गेटिंग 10050 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी was 50, right? Yeah, it was 50. Now we will be doing the cancellation and we are getting 5 2 times 10, 0 5 1 times 5. So हमारा सिग्मा स्क्वायर 201 आ रहा है, right? That means variance is 201. Standard deviation will be square root of 201. Got it? Yes, ma'am. ओके, तो ऐसे ही हमें फाइंड करना है. मीन तुम्हें कैसे फाइंड करना है, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे. अगर तुम्हें लगे कि नहीं ये स्टेप डेविएशन मेथड एंड ऑल, ऐसे डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, 45 इंटू 7, 35 इंटू 3, ये सारे कैलकुलेशन मेरे लिए ज्यादा सिंपल है. मैं मल्टीप्लाई कर, लाइक यू कैन डू द मल्टीप्लीकेशन, देन यू कैन डू इट. हियर इट इज नॉट मैंडेटरी
that you need to use the assume mean method or step deviation method. I have shown you both the method. Okay, in case if you want to use it, you can use it in any of the question. Okay, basically we understand why we can use these methods, because we think that doing multiplication can be time taking, but doing addition and subtraction and creating four more column, okay, where we are just adding the number, subtracting the number, will be simpler. That's why we are doing this all. Okay, if you can do multiplication, you can do that way as well. Now let's move. Now there is one more method for finding the variance and the standard deviation. One more method we are having which will help us for finding the variance and standard deviation. And this method, basically the method which I am going to write, ये जो method है हमारे पास, ये हमारे जो previous method है ना, 1/n, okay, summation of fi xi minus x bar whole square, यहीं से ये मेथड निकल के आया है. जब हमने ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसे एक्सपैंड करके स्क्वायर किया है, तो हमें एक न्यू मेथड मिल गया. तो हमने बोला कि ये न्यू मेथड भी हम अगर अगर हमें लाइक लगे कि न्यू मेथड हमें यूज करना है, इट्स कंप्लीटली अप टू अस. Whatever method you want, you can use it. So the method is, we'll be getting 1/n square, okay, summation of fi xi square minus, just a second, just a second. Yeah, minus fi xi, this complete square. Here I must write different bracket. Yeah, this is the formula for variance. Okay, हम क्या create कर, we will be using this formula, don't worry. This is the formula, and while finding the standard deviation, that is just sigma, we will be taking a square root of everything. Okay, so you can understand 1/n will come out, and rest of the thing, everything will be there. Oh yeah, here n was also there. Just a second, let me check. Yeah, this is the formula we are having. Okay, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसे यूज कैसे करेंगे? ओके, और ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो ये जो हमारे पास प्रीवियस, हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ना, इससे इस ब्रैकेट को अगर हमने ओपन करके a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया, तब हमें ये वाला, ये सारे टर्म्स मिलेंगे. ओके, लेट्स डू वन क्वेश्चन वेयर वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, तब ये the uses of this formula will be more clear to you. So let me take one example over here. Suppose our data look like this: xi fi, that is 3 7, that is 8 10, 13 15, 18 10, 23 6. Okay, let's write in tabular form. So our data xi is 3 8. You can see discrete frequency distribution table we are having. Okay, fi is 23 is also there. Fi is 7.
FI is 7, 10, 15, 10, 6. Now let's see the formula. See, we have to find the variance over here, and we also have to find the standard deviation. So at first we will be finding the variance. Okay, whatever we will be getting as a variance, the standard deviation will just be the स्क्वायर रूट ऑफ दैट. सो हमें ये जो वेरिएंस है हमारे पास यहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखो अलियन अलीना, इस फॉर्मूले में क्या है, 1/n स्क्वायर. वी नो दैट n इज नथिंग बट जस्ट द समेशन, राइट, ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, राइट, राइट. Yes, ma'am. ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, इस फॉर्मूले में हमारे पास है FI XI स्क्वायर. मतलब हमें एक XI स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, देन हम FI XI स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं. और हमें क्या चाहिए, हमें FI XI वाला भी कॉलम चाहिए. यहाँ ध्यान से देखे, ये क्या, ये तुम्हें समझ में आ रहा है दैट, लेट मी कम ऑन दिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट FI XI स्क्वायर का मतलब होता है F1 X1 स्क्वायर प्लस F2 X2 स्क्वायर प्लस F3 X3 स्क्वायर. इसका मतलब ये है. ओके, एंड FI XI का मतलब होता है F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3. इन सारे को ऐड करके तब हम स्क्वायर कर रहे हैं. आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? गेटिंग इट अर्ली ना लीना? Yes, ma'am. ओके, तो अगर हमें FI XI समेशन ऑफ FI XI होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो पहले हमें FI XI कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा और वहां से हम समेशन ऑफ FI XI फाइंड कर पाएंगे. सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, FI XI कॉलम क्रिएट करना होगा, फिर यहाँ हम टोटल करेंगे, तब जाके हमारे जो सेकेंड वाले टर्म में दिख रहा है FI XI complete square, this we will be getting over here. Are you understanding it? Yes, ma'am. ओके, और हमारा जो फर्स्ट टर्म है जहाँ पे हमें दिख रहा है हमें FI XI स्क्वायर फाइंड करना है, उसके लिए हमें XI स्क्वायर कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन हमें FI XI स्क्वायर फाइंड करना होगा, एंड दैट समेशन विल बी यूज्ड ओवर हियर. गेटिंग इट? Yes, ma'am. लेट्स यूज इट. ओके, लेट्स डू इट. So FI XI 7 3 times 21, 8 into 10 80, 13 into 15, 15 3 times 45, 5 carry 4, 15 1 times 15, 16 17 18 19. 18 into 10 180, 6 3 times 18, 1 carry. Now we have to add all of them, so let's add it. We must, like here also, okay, you must write it properly in arranged manner. I can add it without even arranging, but you must write it properly. Okay, I can add it like this: 1 plus 0 plus 5 plus 0 plus 8. Okay, that is 1 plus 0 1, 5 6, 6 plus 8, 6 plus 8 14, 4 carry 1, then 2, then 8 10, 9 19, 19 and 8 27, 28 29 30, 31 1 carry 3. 3 we are already having in hand, and then 1 1 2 1 3 3 3 6. Are you getting 614? Please check it. Yes or no? Yes, ma'am.
अभी हमें एक्साइज स्क्वायर भी फाइंड करना है, मतलब 3 स्क्वायर 9, 8 स्क्वायर 64, 13 स्क्वायर 169, 18 स्क्वायर 324, 23 स्क्वायर अभी अभी हमने देखा था 529 मिला था हमें, राइट? या नाउ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो हमें एक्स आई स्क्वायर वाले कॉलम को एफ आई से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, दिस वन. So we will be doing the multiplication. 7 in 9, 7 times 63, 64. See, we are multiplying this one with this one. 64 into 10, 640. Okay, 169 into 15. You have to do the multiplication separately. Please tell me what are you getting. 3240 and 529 into 6. I am doing this one. You do this one. Ali and Alina, this two circled one. Yes, ma'am. Please multiply it. 2535. Please add all of them. Ma'am, I got 2,535. Yeah, please add all of them because we need to find the summation of fi xi square. Nine six five two. So we are getting 9652 over here. और अभी अभी हमने देखा हमारे पास एक फॉर्मूला था, दैट इज सिग्मा स्क्वायर. अगर हमें वेरिएंस फाइंड करना हो तो फॉर्मूला वाज 1/n स्क्वायर, देन अ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. यहाँ हमारे पास n था एंड इसके साथ क्या था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर था.
okay, minus summation of fi xi, that's complete square we are having. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, and sigma will be just the square root of everything. So 1 by just 10 and a square root of this everything, rectangular bracket. Okay, हमारा क्या है? 640. This is the summation of fi xi. Okay, 614. We have got the summation of fi xi. That's the square will be here. fi xi square 9652 है हमारे पास. Okay, this एन हमारा क्या है? चलो देख लेते हैं. फ्रीक्वेंसीज का समेशन क्या है? 7 + 10 17. ओके, 17 + 15, 17 + 15 32, राइट? राइट, yes. 32 + 10 42, 42 + 6 48. Are we getting 48? Let me check. 48 data points are given over here or what? Yeah, 48 data points we are having. ये जो डेटा टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम आता है, ये कभी कभी क्वेश्चन में स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखा रहता है कि टोटल वी आर हैविंग 48 डेटा points. Okay, so 48 we are getting summation of frequency, so that is 48 we will be writing over here, and 1 by n square, that means 1 by 48 square, and this will give us sigma square. इतना लेंदी कैलकुलेशन होगा, ऑफ कोर्स इतना लेंदी कैलकुलेशन होगा, एंड यू हैव टू डू इट. ओके, इफ वेरिएंस इज आस्क्ड. अदरवाइज इफ डायरेक्टली standard deviation is asked, then you can take this form. Now still you have to do all the work. बस हमारा स्क्वायर रूट के बाहर हमारे पास बस 1/48 होगा, बट स्क्वायर रूट के अंदर अभी भी हमारा कैलकुलेशन लेंदी है. यहाँ भी कैन यू सी दैट? -614 स्क्वायर. जब भी इतना लेंदी कैलकुलेशन होता है, एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो. पहले चेक कर लेते हो क्या ये जो हमारे पास, दिस इज वन ऑफ द टर्म एंड दिस इज अनदर टर्म, इन दोनों टर्म में से क्या कुछ कॉमन फैक्टर निकल रहा है क्या? ओके, अगर कुछ कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो हमारा सब्ट्रैक्शन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, राइट? Yes, ma'am. हो सकता है हमारे पास ये जो डेनोमिनेटर में 1/48 स्क्वायर है, ये जो तुमने कॉमन फैक्टर निकाला है वो कैंसल आउट हो जा रहा है दिस 48 स्क्वायर से. ओके, तो ऐसे अगर सिंप्लीफाई थोड़ा स्मार्टली करोगे तो इजीली हो जाएगा. इट विल बी टाइम टेकिंग, बट इफ यू विल डू स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट विल टेक मोर टाइम देन इफ यू विल टेक कॉमन फैक्टर. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल बी गेटिंग. This is just another way of finding the variance and standard deviation. Now, अगर हमारे क्वेश्चन में बोला जाए that use short trick method, okay, एक हमारे पास short trick method भी है, और स्पेसिफिकली ये मेथड हम तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में बोला जा रहा है that use short trick method. अदरवाइज we are good. Like ये जो short trick method है, ये हम इसलिए like this method exists because for finding the variance and for finding the standard deviation, क्योंकि हो सकता है हमारा जो हम डेविएशन क्रिएट कर रहे थे एंड देन स्क्वायरिंग कर रहे थे ओरिजिनली, जहां से हमने आज का क्लास स्टार्ट किया, हमने डिस्कस किया कि हम डेविएशन क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल बी डूइंग द स्क्वायर ऑफ दैट. यस और नो? Yes, ma'am. हो सकता है ये स्क्वायरिंग बहुत बिग नंबर आ जाए, बहुत लार्जर नंबर आ जाए, और फिर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन विद द फ्रीक्वेंसी इट विल बी रियली टीडियस. ओके, बहुत अगर कैलकुलेटिव हो जाए, बहुत टाइम टेकिंग हो जाए, तो हम जरूर इस शॉर्ट ट्रिक मेथड को यूज करेंगे. डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ एंड एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, देन द फॉर्मूला इज बेसिकली, अभी अभी जो तुमने फॉर्मूला देखा है, ये फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही दिखता है. हमें सिग्मा फाइंड करने के लिए जस्ट let me write sigma square first. Okay, so sigma square is h square by n square.
Okay, and rest of the thing is exactly same, whatever we have written just now. So it was summation of like n summation of, हम अभी हमारे पास क्या था, एफ आई एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास होगा एफ आई वाई आई स्क्वायर. आई एम कमिंग टू द पॉइंट दैट व्हाट इज वाई आई एंड ऑल. ओके, माइनस अभी हमारे पास क्या था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर था, यहाँ पे एफ आई वाई आई दैट्स होल स्क्वायर वी आर. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज एफ आई, what is this yi. Now sigma can be written as just the square root of everything, that is h by n. Okay, the square root of n fi yi square minus any confusion so far. This is the direct formula we are having. Okay, I'm showing you how to find yi, how to deal with the question. So suppose our example is, I'm directly writing in tabular form. Suppose the class interval we are having 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, like that, 90 to 100, 70 to 80, 80 to 90, and 90 to 100. Frequency 3, then 7, then 12, then 15, then 8, then 3, then 2. Okay. Now, whenever we are having data in continuous group data, like we will be finding the midpoint, right? That is class mark, yes or no? Only this much data is given in the question. We need to find class mark, yes or no? Ali and Alina, Yes, ma'am. this will be the class mark, right? Yes, ma'am. Yeah. Now we will be finding yi. Yi, now only we were discussing the step deviation method. What we were doing over there, we were from this class mark, we were finding the middle row, right? Can you tell me which one is the middle row? Yes. Can you tell me which one is the middle row? 60 to 70. 60 to 70, that means 65, right? Yes, ma'am. अज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड में हम जो प्रोसेस, जो स्टेप्स परफॉर्म कर रहे होते थे, यहाँ भी हमें सेम स्टेप्स परफॉर्म करने हैं. क्या हम फाइंड करने वाले हैं? वाई आई. वाई आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ये जो हमने अज्यूम ए लिया है, दिस डिवाइडेड बाय एच. तो ये तो स्टेप डेविएशन मेथड जैसा दिखता है. हाँ, ये स्टेप डेविएशन मेथड जैसा ही दिखता है, और ये मेथड हमें हेल्प करता है हमारे नंबर्स को स्मॉलर करने में, राइट? Yes, ma'am. ओके, सो वी विल बी फाइंडिंग वाई आई फ्रॉम हियर. नाउ अकॉर्डिंगली हमारे पास अब क्वेश्चन में जो जो है, अब अगर हमें पता लग गया वाई आई क्या होता है, तब तो हम क्वेश्चन फॉर्मूले में जो लाइक वॉट एवर इज देयर, एफ वाई वाई आई स्क्वायर, एफ आई वाई आई, this complete square, we will be able to find it, yes or no? Yes, ma'am. Okay, ये जो शॉर्ट ट्रिक मेथड है, ये इसलिए यहाँ पे h ध्यान में रखना, h इज द क्लास साइज. ओके, ये शॉर्ट ट्रिक मेथड इसलिए हम यूज करते हैं जब हमारा
कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो जाता है. ओके, डूइंग, फाइंडिंग द सब्ट्रैक्शन, डूइंग द स्क्वायरिंग. ओके, अगर हमें बहुत लार्जर नंबर, सपोज हमारा अगर हमने एक्स आई माइनस एक्स बार किया और हमें बहुत बिग नंबर, कोई लार्जर नंबर मिल गया. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू एंडेड अप गेटिंग 122. Okay, doing square of such number is really tedious. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, तब हम ये सॉर्ट ट्रिक मेथड जरूर यूज करेंगे. okay. यहाँ हमें कॉलम्स ज्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे. जैसा कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अभी तो हम यहाँ से सिर्फ वाई आई फाइंड कर पाएंगे. इसके बाद हमें एफ आई वाई आई भी फाइंड करना होगा. ओके, देन उसके बाद हमें वाई आई स्क्वायर एक कॉलम भी क्रिएट करना होगा और एफ आई वाई आई स्क्वायर कॉलम भी क्रिएट करना होगा. यस और नो? Ma'am. उसके बाद यहाँ से जो हम एफ आई वाई आई फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई वाई आई हमें यहाँ से मिलेगा. ओके, एंड समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर हमें यहाँ से मिलेगा. उसके बाद हमें सब कुछ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, बट या वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, वी आर लाइक बाउंड टू डू इट. ओके, तो ये सारे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं और अच्छा मार्क्स भी कैरी करते हैं. अगर एक एक क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, then it will be having 4 marks, 5 marks. Okay, you just need to do the calculation carefully. Getting it early, and Alina? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are done with this, is the complete, like all the concepts from here. Any confusion so far? No, ma'am. I am summarizing कि आज के क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया. आज के क्लास में सबसे पहले मैंने दिखाया वेरिएंस क्या होता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है. तो मैंने बोला ये जो फॉर्मूला है, ये हमारा, पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेके समेशन फाइंड करते थे और इस बार हम स्क्वायर ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि जब हम डेविएशन कॉलम क्रिएट कर रहे थे, कुछ नंबर्स नेगेटिव, कुछ नंबर पॉजिटिव, तो हो सकता था कि कभी कोई ऐसा डेटा हमें मिल जाए जहाँ पे हमारा फाइनल आंसर 0 आ जाए. इसलिए पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले रखा था जब हम मीन डेविएशन फाइंड करते थे. इस बार हमारे पास स्क्वायर है. एक और बात, जब हम मीन डेविएशन फाइंड कर रहे होते थे तो हम देखते थे मीन डेविएशन अबाउट मीन हमें फाइंड करना है या अबाउट मीडियन. बट यहाँ हर बार हमें अबाउट मीन ही फाइंड करना है. ओके, यहाँ मीडियन हमें नहीं लेना है. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला वी डिस्कस. आई एम राइटिंग ऑल द फॉर्मूलाज. सबसे पहले हमने डिस्कस किया दैट वेरिएंस का एक फॉर्मूला है, दैट इज 1/n summation of fi xi minus x bar complete square. Okay, and sigma will be, standard deviation will be just square root of this all, square root of this all. उसके बाद हमने देखा एक और फॉर्मूला है जो कि यहीं से आया है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n square. Okay, then a bracket, n is there, then summation of fi xi square was there minus fi xi, summation of fi xi. Let me write it properly. Actually this, yeah, summation of fi xi. I'm not able to write, just a second.
Yeah, it was n summation of fi xi square, okay, minus summation of fi xi, that's complete square, right? This is hanging a lot today. Wow. Right, this was the formula, right, Ali and Alina? And sigma is nothing but just the square root of that. So 1 by n and square root of this bracket, right? Yes, Yes or ma'am. no? And there is a short trick formula also, that is sigma square is equals to nothing but h square by n square. Okay, then in bracket we are having n over here, and this time we are having fi yi square we are having, minus summation of fi yi complete square we are having. Okay, and sigma is just the square root of this one, that means h by n and square root of this complete bracket. Got it, Ali and Alina? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब बस तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला में किसका मतलब क्या होता है ये याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने के लिए भी बैठ के लाइक लर्न नहीं करना होगा, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, दिस फॉर्मूला वी आर डूइंग द स्क्वायरिंग ओवर हियर। ओके, द अदर फॉर्मूला just